Hello, everyone. Welcome to all of you in the FFB Live Chemistry class. हाइड्रोजन चैप्टर तुम लोगों का अभी चल रहा है, जिसमें पिछले क्लास में हमने ड्यूटीरियम, ट्राइटियम और हैवी वाटर के बारे में बताया था क्लास में। उसकी कंप्लीट स्टडी तुम लोगों ने की। हैवी वाटर किस तरह से बनता है और उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और साथ में ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के बारे में भी हमने बताया। आज का क्लास है हाइड्रोजन का ही कंपाउंड है, हाइड्रोजन पराक्साइड। तो आज के क्लास में हम हाइड्रोजन पराक्साइड की कंप्लीट केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, जिसमें उसका प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और कंसंट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन का लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Now your topic on the screen, hydrogen peroxide. Molecular formula of hydrogen peroxide is H2O2. Hydrogen peroxide was discovered by French chemist L.J. Thenard in 1880 by the action of sulfuric acid on barium peroxide. It was called oxygenated water. वाटर का फॉर्मूला H2O2 है, तो फार्मूले से भी इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं. इट ऑकर्स इन ट्रेसेस इन एयर, रेन, स्नो, सम नेचुरल वाटर्स एंड जूस ऑफ सर्टेन प्लांट्स. Now method of preparation. So laboratory preparation is important for hydrogen peroxide. In laboratory, first process from sodium peroxide. It is prepared in the laboratory by adding a small amount of sodium peroxide to ice cold water. This is ice cold water, and this is sodium peroxide. Both reacts to form sodium hydroxide and main product hydrogen peroxide. In place of cold water, dilute sulfuric acid 20% can be used. Sodium peroxide in a small amount at a time is added to hold 20% sulfuric acid. Then the reaction takes place. Sodium peroxide plus sulfuric acid forms hydrogen peroxide and sodium sulfate. The crystal of hydrated sodium sulfate Na2SO4.10H2 are removed by cooling the solution. The solution of hydrogen peroxide obtained always consists of some dissolved sodium sulfate. The concentration of H2O2 is about 3%. Now, second method from barium peroxide. Hydrogen peroxide can be obtained by adding barium peroxide to dilute sulfuric acid at 0 degrees centigrade. The reaction between anhydrous barium peroxide and sulfuric acid is, however, slow and practically ceases after some time due to the formation of a protective coating of barium sulfate on the barium peroxide. This difficulty can be overcome if hydrated barium peroxide is used in place of anhydrous barium peroxide. तो hydrated barium peroxide, जिसमें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़े हों, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस बेरियम सल्फेट और H2O यानी वाटर के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है. The barium sulfate formed is filtered off and solution of H2O2 is obtained. Barium sulfate precipitate होता है, इसको फिल्टर कर लेते हैं और हमें H2O2 मिल जाती है. The use of sulfuric acid has a disadvantage as it catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide form. In place of sulfuric acid, weak acid like orthophosphoric acid
carbonic acid are preferred. Barium peroxide on treatment with orthophosphoric acid gives a precipitate of barium phosphate and hydrogen peroxide which goes into the solution. तो बेरियम ऑक्साइड आर्थोफॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन करके बेरियम फॉस्फेट का ये प्रेसिपिटेट बनता है जिसको अलग कर देते हैं एंड हमें 3H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलती है. Insoluble barium phosphate is filtered off. The filtrate consists of hydrogen peroxide. The barium phosphate is decomposed by dilute sulfuric acid. dilute sulfuric acid डालेंगे तो बेरियम फॉस्फेट डिकम्पोज हो जाता है बेरियम सल्फेट और फॉस्फोरिक एसिड में. दिस इज रिमूव बाय फिल्ट्रेशन एंड आर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड अगेन. तो उसी में क्रम में ऐसा करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे जो हमने अलग किया था बेरियम फॉस्फेट उसको प्रेसिपिटेटेड कर लेते हैं. फिर से हमें आर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है जिसको हम रिएक्शन के लिए फिर से यूज कर सकते हैं. अलग से हमें डालने की जरूरत नहीं होती. नाउ अनदर प्रोसेस इज मर्क्स प्रोसेस. हाइड्रोजन peroxide can be obtained by passing a current of carbon dioxide through a cold pasty solution of barium peroxide in water. तो बेरियम peroxide प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के और इसके बेरियम ऑक्साइड और H2O के साथ इसका पेस्ट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो बेरियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है. बेरियम कार्बोनेट बीइंग इनसॉल्युबल इज फिल्टर्ड ऑफ. नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस large scale production of hydrogen peroxide. First है auto oxidation of 2-butyl anthraquinol. This is the most recent process for the manufacture of hydrogen peroxide. 2-butyl anthraquinone is catalytically reduced to 2-butyl anthraquinol in an organic solvent by passing hydrogen in presence of palladium. It is then oxidized by passing air. The hydrogen peroxide is extracted with water to give about a 20% solution. 2-butyl anthraquinone is reformed, which is used again. The method that involves alternate oxidation and reduction step. The second by oxidation of isopropyl alcohol. This industrial method of manufacture of hydrogen peroxide involves the oxidation of isopropyl alcohol with oxygen under slight pressure. The isopropyl alcohol is mixed with a small amount of H2O2 and oxygen is passed through it at 70 degrees centigrade. The H2O2 act as an initiator. The alcohol gets oxidized, giving acetone and hydrogen peroxide. Here is the reaction. This is 2-butyl anthraquinone. हाइड्रोजन पास करते हैं इसमें तो ये बदल जाता है 2-butyl anthraquinone जो पहला प्रोसेस बताया था. फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बनाता है दिस प्रोडक्ट एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू दिस और हमें साथ में क्या प्रोडक्ट मिलता है H2O2. और दूसरा रिएक्शन आइसोप्रोपिल अल्कोहल reacts with oxygen at 70 degrees centigrade to forms acetone and hydrogen peroxide. Acetone and unreacted isopropyl alcohol distilled over, leaving behind the aqueous solution of hydrogen peroxide. Now the electrolytic process. In this process, the electrolysis of 50% of sulfuric acid is carried out at low temperature using platinum electrodes and a current of high density. Peroxidized sulfuric acid is formed.
sulfuric acid dissociate into hydrogen and hydrogen sulfate ion. Hydrogen sulfate ion loses the electron at anode and form peroxide disulfuric acid. Peroxide disulfuric acid is distilled, hydrolysis occurs, and distillate containing about 30% H2O is obtained. The reaction is this. Peroxide disulfuric acid reacts with water to form sulfuric acid and hydrogen peroxide. So this reaction is very important. In place of 50% sulfuric acid, ammonium hydrogen sulfate dissolved in excess of sulfuric acid can be used for electrolysis. Ammonium hydrogen sulfate dissociate into ammonium sulfate ion and H plus ion, and this at anode loses the electron and form ammonium peroxide disulfate. At cathode, hydrogen ion take this electron and formed H2. The solution containing ammonium peroxide disulfate is heated at 43 mm pressure. When its hydrolysis occurs forming hydrogen peroxide. तो ये कंपाउंड बना अमोनियम peroxide डाइसल्फेट. हाइड्रोलिसिस होती है इसकी एट 43 मिलीमीटर प्रेशर पे. तो ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट और मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? हाइड्रोजन peroxide. Hydrogen peroxide along with water distilled over ammonium bisulfate can be used again. This method gives 30 to 40% aqueous solution of hydrogen peroxide. D2O2, deuteroperoxide, can also be prepared by this method. K2S2O8 plus 2D2O heavy water से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है KDSO4 टू आगे प्लस ड्यूटीरियम पेरोक्साइड, ड्यूटीरियो पेरोक्साइड. ये था मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. उसके बाद जो भी सॉल्यूशन मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो मोस्टली वाटर के साथ डिसॉल्व होता है. तो अब कंसंट्रेट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को. द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, process of concentration. Hydrogen peroxide obtained by the above method is always in the form of dilute aqueous solution. The concentration of this solution is difficult due to explosive nature of hydrogen peroxide. The explosive decomposition is catalyzed by the presence of organic matter and metallic ions. The concentration of the aqueous dilute solution having H2O2 is done carefully by the application of the following steps. First step, the dilute solution is concentrated at 60 to 70 degrees centigrade on a water bath. Water being more volatile than hydrogen peroxide, a considerable amount of water gets evaporated and the concentration of the solution becomes 30%. It is not advised to concentrate the solution beyond 30% as there is possibility of an explosion by this step. Second, the above solution is distilled at 35 to 40 degrees centigrade under reduced pressure of about 15 mm in apparatus shown here. इस apparatus में इसको कंसंट्रेशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं इस फ्लास्क में और इसको टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हुए इसका क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं. तो यहाँ पे ये रिसीवर है, वेपर्स यहाँ पे आती है और उसके बाद इसको यहाँ ये तुम्हारा वैक्यूम पंप लगा के इसको लो प्रेशर पे, कम प्रेशर पे डिस्टिलेशन कराया जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस में 90% H2O2 मिल जाती है. रिपीट करने पे कम से कम 2-3 बार रिपीट करेंगे कंसंट्रेशन एपरेटस में तो हमें 90% तक कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी.
Further concentration is achieved by cooling 90% solution with the help of solid carbon dioxide and ether bath till crystallization set in. Crystals are separated, melted, and refrozen to get 99% H2O. Now storing. The decomposition of H2O2 is easily catalyzed by metals, rough surfaces, sunlight, dust particles, glass, and alkali. It is stored in vessels of pure aluminum or in stone jars in dark. Concentrated solution of hydrogen peroxides are stored these days in wax-lined glass and polythene bottles kept in refrigerators. Small amount of stabilizers such as orthophosphoric acid, acetanilide, urea, or sodium stannate are added to the solution to be stored. Now, properties of hydrogen peroxide. First, physical properties. Pure anhydrous hydrogen peroxide is a syrupy liquid. It is colorless but gives a bluish tint in thick layers. It is odorless. Second, its specific gravity is 1.45 at 0 degrees centigrade and more viscous than water. This is due to the fact that molecules of H2O2 are more associated through hydrogen bonding. It is soluble in water, alcohol, and ether in all proportion. It has a bitter taste. It is injurious to skin. Blisters are formed when dropped in the skin. It boils at 150 degrees centigrade and freezes at minus 0.89 degrees centigrade. It begins to decompose at boiling point. However, it can be distilled under reduced pressure. The dipole moment of H2O2 is little more 2.1 D than that of H2O. Now, physical constant of hydrogen peroxide. Melting point 272.4 Kelvin and boiling point 423 Kelvin. Vapor pressure 1.9 at 298 mm of Hg. Density 1.64. Density at a solid state this, and in liquid state at 298 Kelvin 1.44. Viscosity in centipose 1.25, dielectric constant 70.7, electrical conductivity at 298 Kelvin is 5.1 into 10 to the power minus 8, ohm minus 1, cm minus 1. Now chemical properties. Some reactions of hydrogen peroxide is very important. Let us see, like decomposition of stability. डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide, तो स्टेबिलिटी भी इसी में चेक होगी. Pure hydrogen peroxide is an unstable liquid and decompose into water and oxygen on long standing or increasing temperature. तरह से बहुत देर तक रखा रहेगा तो ये वाटर रिलीज करता है. The decomposition is faster in presence of certain metal ions, that is iron, metal powders of cobalt, silver, gold, platinum, etc., metal oxides, MnO2, magnesium dioxide, carbon, alkali, etc. Even rough surface, light, and dust particle catalyze its decomposition. Traces of acids, acid anhydride, alcohol, stannates or urea increase its stability. इसको डाल के रखने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिकम्पोजिशन रुकता है. Now, acidic nature of hydrogen peroxide. The pure liquid has weak acidic nature as it changes blue litmus to red, but its aqueous solution is neutral towards litmus. Its dissociation constant at 20 degrees centigrade is 1.55 into 10 to the power minus 12.
which is slightly more than water. It forms two series of salts by replacement of one or both the hydrogen atoms, forming hydroperoxide, that is acidic salt, and peroxide, that is normal salt. The H2O2 reacts with water to form hydronium ion and hydroperoxide ion HO2 minus, and HO2 minus यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोपेरोक्साइड आयन reacts with water to form hydronium ion and peroxide ion O2 minus. H2O2 neutralize कनेक्शन ऑफ हो गया था बीच में, तो हम फिर से वहीं से लेते हैं. Please wait some time. नेट की प्रॉब्लम है इसलिए बीच में कट हो गया. नो प्रॉब्लम, आ जा रहा है वापस. तो हम केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे, उसी पे चलते हैं. तो ये रिएक्शन बता दिया था किस तरह से ये पेरोक्साइड आयन बनाता है. उसके अलावा H2O2 न्यूट्रलाइज एल्कलीज एंड कार्बोनेट्स. NaOH and H2O2 reacts to form sodium hydroperoxide. This is sodium hydroperoxide plus H2O. और NaOH H2O से रिएक्ट करके सोडियम पेरोक्साइड भी बनाता है. तो ये उसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म बेरियम ऑक्साइड एंड वाटर, and sodium carbonate neutralize with H2O2 to form sodium peroxide, carbon dioxide, and form water. Now, oxidizing and reducing nature. H2O2 behaves as an oxidizing as well as a reducing agent in both acidic and alkaline medium. However, it is a powerful oxidizing agent but a weak reducing agent. The oxidation state of oxygen in H2O2 is -1. It can be reduced to H2O or OH ion, that is oxygen in +2 oxidation state, or it can be oxidized to O2, that is oxygen in 0 oxidation state. Now, see the oxidizing nature. H2O2 is a powerful oxidizing agent as it is an electron acceptor in acidic and alkaline solution. H2O2 in acidic medium H plus से रिएक्शन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इन एल्कलाइन मीडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करते हुए 3 more hydroxyl ion form होते हैं. However, the reactions are generally slow in acid solution but fast in alkaline solution. Oxidizing nature of hydrogen peroxide can be interrupted on account of the possession of labile oxygen atom. The potential equation for its oxidation nature can be written as H2O2. तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को.
The following examples show the oxidizing nature of H2O2. In acidic medium, it oxidizes H2S into sulfur. H2O2 से रिएक्ट करके ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है। और इसमें रोल किसका होता है? नेसेंट ऑक्सीजन का, जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड स्प्लिट होकर हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये H2S से रिएक्शन करके सल्फर को रिड्यूस करता है। It oxidizes acidified ferrous sulfate to ferric sulfate. Reaction is here. Ferrous sulfate, sulfuric acid, H2O2, उसी तरह का रिएक्शन। तो ये फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका जो आयनिक रिएक्शन हम इस तरह लिखते हैं, फेरस आयन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन, फेरस आयन टू फेरिक आयन. It oxidizes acidified potassium ferrocyanide to potassium ferricyanide. The complete reaction is this: potassium ferrocyanide K4 efficiency in presence of, in the acidic medium H2O2, it converted potassium ferrocyanide to potassium ferricyanide. The ionic reaction is this: ferrocyanide ion, ferrocyanide ion reacts with the H2O2 to convert into ferricyanide. It liberates iodine from acidified potassium iodide. Potassium iodide, sulfuric acid, H2O2. It liberates iodine, and K2SO4 and H2O is formed. H2O2 oxidizes sulfurous acid into sulfuric acid. Sulfurous acid reacts with H2O2 to form sulfuric acid. It oxidizes mercury to mercuric oxide. Mercury reacts with hydrogen peroxide in presence of sulfuric acid. It forms mercuric oxide and water. A solution of chromic acid in sulfuric acid or ice cold acidified potassium dichromate is oxidized to blue peroxides of chromium, that is CrO5, which is unstable. However, it is soluble in ether and produce blue colored solution. Reaction is that potassium dichromates in presence of sulfuric acid reacts with hydrogen peroxide to form peroxide of chromium 2CrO5 plus K2SO4 plus 5H2O. This is blue colored solution. Ionic reaction, ये सामने नीचे दिया है, chromate ion reacts with H2O to form this. Now peroxide of chromium decomposes to form chromic sulfate and oxygen. अब ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से और क्रोमिक सल्फेट एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. Peroxide of chromium is represented as, peroxide chromium peroxide का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जिसको कि बटरफ्लाई शेप कह सकते हैं, बटरफ्लाई की तरह बना हुआ है. Aqueous solution of hydrogen peroxide oxidizes lead sulfide into lead sulfate. Very important reaction. PbS plus 4H2O, PbSO4 plus H2O. This reaction is used for restoration of white color to lead painting which have been blackened due to H2S present in atmosphere. इन एल्कलाइन मीडियम, अभी तक के रिएक्शन क्या थे? एसिडिक मीडियम में H2O2 oxidizes sulfides, nitrites and arsenite to sulfates, nitrates and arsenates respectively in alkaline solution. Sodium sulfide ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसी तरह सोडियम नाइट्राइट reacts with H2O2 converted into sodium nitrate, and sodium arsenate react with hydrogen peroxide to converted Na3ASO4 plus H2O. This is arsenate, this is arsenite. It
oxidizes benzene to phenol in alkaline medium in presence of ferrous sulfate. ये H2O2 बेंजीन से रिएक्शन कर होता है FeSO4 की प्रेजेंस में, तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. डिसॉल्व द क्रोमिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट प्रेजेंट इन NaOH solution forming a yellow solution of sodium chromate. This is the chromic hydroxide reacts in presence of sodium hydroxide with H2O2, so it forms chromic hydroxide. This is chromic hydroxide. This is solution of sodium chromate, Na2CrO4. This is sodium chromate. H2O2 oxidize formaldehyde to formic acid. This oxidation occurs in presence of pyroxyle and alkaline medium. Formaldehyde reacts with H2O2 to form formic acid. In alkaline medium is oxidized manganese sulfate to manganese dioxide. Manganese sulfate reacts with H2O2 in presence of alkali, any basic medium, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर देता है और उसके अलावा सोडियम सल्फेट और वाटर फॉर्म होगा, जिसका आयनिक रिएक्शन Mn2 प्लस से यहाँ Mn4 प्लस यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है. नाउ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ वीक रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अब रिड्यूसिंग नेचर इसका, इट कैन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ये रिड्यूस कर देता है. H2O2 ये स्प्लिट होकर के 2H प्लस और O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम में ऐसा होता है. In alkaline solution, however, its reducing action is more effective. H2O2 alkaline medium में OH आयन से रिएक्शन करके 2H2O O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन देता है. The potential equation when H2O2 act as reducing agent can be expressed as H2O2 plus O, H2O plus O2 बनाता है. In all cases, reactions, molecular oxygen is always produced by the combination of H2O2 and oxygen atom given by a strong oxidizing agent. Now, in acidic medium, इसका reducing nature इसका देखना है. अब in acidic medium में, it reduce acidified KMnO4 solution. That is, acidified KMnO4 is decolorized by H2O2. KMnO4 reacts with hydrogen peroxide in acidic medium. H2SO4 present है, तो मैग्नेट आयन मैग्नेस आयन में कन्वर्ट हो जाता है. K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5O2. ये चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से मैग्नस आयन बन रहा है, मैग्नेट आयन से मैग्नस आयन +2. इसका ये रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है. मैग्नेट आयन reacts with hydrogen peroxide to convert in magnus ion and H2O and oxygen. It reduces acidified potassium chromate, dichromate solution. Orange color changes to green due to formation of chromium sulfate. Potassium dichromate reacts first sulfuric acid to form chromic sulfate and nascent oxygen. Nascent oxygen reacts with hydrogen peroxide to form water and oxygen. The overall reaction, potassium dichromate plus sulfuric acid plus H2O2 to form chromic sulfate, H2O and 7O2 plus K2SO4. Ionic reaction ये है, Cr2O7 2 minus plus 8H plus 3H2O2, तो 2Cr3 plus 7H2O plus 3. It reduces manganese dioxide to manganese sulfate in presence of dilute sulfuric acid. Manganese dioxide in presence of sulfuric acid
reacts with H2O2 to form manganese sulfate plus water and oxygen. Red lead in presence of nitric acid is reduced to plumbous nitrate. Lead, red lead, this is Pb3O4, reacts with hydrogen peroxide in presence of nitric acid to form plumbous nitrate कहते हैं इसको, lead nitrate plus H2O plus O2. It reduces ozone to oxygen. This is also important reaction. O3 gives O2 plus O. This O reacts with H2O2 to form H2O plus O2. यानी O3 को ये reduce कर देती है oxygen. Chlorine and bromine are reduced to respective hydro acids. Chlorine, these two both are important reaction. Chlorine plus H2O2 form 2HCl plus O2 and Br2H2O2 form 2HBr plus O2. This property to remove chlorine is known as anti-chlor. It reduces hypochlorous acid to halide ion. Hypochlorous acid gives oxygen which reacts to H2O2 to form H2O and O2. Overall reaction, hypochlorous acid H2O2 forms HCl, H2O and O2. In alkaline medium, H2O2 reduces alkaline potassium permanganate to manganese dioxide in alkaline medium. Potassium permanganate reacts with H2O2 in presence of KOH. It forms MnO2, 2H2O and 3O2. Overall reaction is this. Ionic reaction, magnet H2O2 से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मैग्नस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, वाटर एंड ऑक्सीजन. H2O2 reduce ferric salt to ferrous salt in alkaline medium. फेरिक आयन होगा फेरिक साल्ट में, H2O2 से रिएक्ट करेगा, एल्कलाइन मीडियम है तो OH आयन प्रेजेंट होगा तो फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में वाटर एंड H2O2. Now potassium ferricyanide in alkaline solution is reduced to potassium ferrocyanide. Potassium ferricyanide reacts with H2O2 in alkaline medium to form potassium ferrocyanide, H2O and O2. आयनिक रिएक्शन ये है. Ferricyanide converted to ferrocyanide. H2O2 reduce iodine to iodide ion in alkaline medium. Iodine reacts with hydrogen peroxide in alkaline medium, forms iodide ion, H2O and O2. H2O2 reduce hypohalides to halides in alkaline medium. These are hypohalides. This is the bleaching powder CaOCl2 reacts with H2O2 to form calcium chloride, water and oxygen. इसी तरह से ये हाइपोहैलाइड्स हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन होने पे NaCl, NaBr बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है. Metal oxides are reduced to metal by H2O2. Ag2O plus H2O O2 तो Ag अलग हो जाता है, H2O और O2 बनता है. Now bleaching action of hydrogen peroxide. This is important property of hydrogen peroxide. The bleaching action of hydrogen peroxide is due to labile oxygen, that is nascent oxygen, which is released on decomposition of hydrogen peroxide. डिकम्पोजिशन होता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है और यही नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लीचिंग एक्शन के लिए. द नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइंड विथ कलर्ड मटेरियल, it oxidizes the colored materials and make it colorless. It is used for the bleaching of delicate articles such as feather silk, wool, ivory, etc. Nowadays, it is also used for bleaching paper, pulp, oil and fats, etc.
Now, addition reaction of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide capable of adding itself to एथिलीनिक लिंकेज, एथिलीन के साथ रिएक्शन ये करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बनाता है एथिलीन ग्लाइकॉल. Now uses of hydrogen peroxide in the form of aqueous solution is used in the bleaching of delicate materials such as wool, silk, cotton, bone, ivory, hair, etc. As a valuable antiseptic and germicide for washing wounds, teeth, and ear under the name of Perthidrol. For restoring color of old paintings, as an oxidizing agent in the laboratory, as anti-clot to remove traces of chlorine and hypochlorite. Highly concentrated solution, about 40% of H2O2, is used to oxidize petrol, alcohol, and hydrazine hydrate for the propelling of rockets and torpedoes. Reaction here, NH2 hydrogen plus 2H2O, so it is converted into nitrogen and H2O. The reaction is highly exothermic and is accompanied by a large increase in value. In the detection, it is used in the detection of Ti4 plus, V5 plus, and Cr3 plus ions. It is used for preserving milk, wine, and other liquor. It is used in the manufacture of many organic compounds such as sodium perborate and percarbonates, which are essential constituents of high quality detergent. It is used in the synthesis of hydroquinone, tartaric acid, and certain food products and pharmaceuticals, that is cephalosporin, etc. It is used in pollution control for treatment of domestic and industrial effluents. Now, test of hydrogen peroxide. A filter paper with a stain of black lead sulfide, when brought in contact with solution of H2O2, the black stain turns white, that is PbS converted into PbSO4. An acidified solution of titanium salt, when treated with H2O2, yellow or orange color is developed due to formation of pertitanic acid. The reaction is here pertitanic acid is formed. H2O2, when shaken with acidified potassium dichromate with little ether, blue color is produced. This is due to the formation of peroxide of chromium, that is perchromic acid. It liberates iodine from Ki solution, which gives blue color in starch solution. It decolorizes acidified potassium permanganate solution. Now, strength of H2O2 solution. The strength of H2O2 in aqueous solution is expressed in the following two ways. First, percentage strength. The mass of H2O2 present in 100 ml of aqueous solution is termed as percentage strength. For example, 25% solution m upon v mole per liter of H2O2 means then 25 gram H2O2 are present in 100 ml of the solution. Why not open? Wait 2 minutes. अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना कंप्लीट हो चुका है. हम क्लास रोक देंगे यहीं पे. शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी. So wait some time.
I don't know why not open this. कोई बात नहीं, तुम्हारा टॉपिक क्लास का पूरा हो चुका है। अगर एक बार फिर से खुल जाता है तो हम फिर से बता देंगे जो बाकी रह गया है, और नहीं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में जो कुछ भी बताना था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं जो तुम्हारे लिए ज़रूरी थी। और बाकी वही परसेंटेज जो बताया वो था, उसके अलावा परसेंटेज इन वॉल्यूम में भी था, लेकिन अगर खुल जाता तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में बता देंगे। आज 2 बार बीच में नेट ने डिस्टर्ब किया है। परसेंटेज स्ट्रेंथ हमने बताया था, उसके बाद था वॉल्यूम स्ट्रेंथ। थैंक गॉड कि खुल गया है, तो इसको यहाँ हम देख लें जरूर से। The strength of the sample of H2O2 is generally expressed in terms of the volume of oxygen at NTP, that 1 volume of the sample of hydrogen peroxide gives on heating. The commercial samples are marked as 10 volume, 50 volume, or 20 volume. 10 volume means that 1 volume of the sample of hydrogen peroxide gives 10 volume of oxygen at NTP. 10 ml of a 20 volume solution of H2O2 will liberate 10 into 20 is equal to 100 ml of oxygen at NTP. 10 volume solution of H2O2 is 3.035% solution. This calculation can be made in the following manner. H2O2 मॉलिकुलर वेट इसका होगा 68 ग्राम, और ये ऑक्सीजन एनटीपी पे देता है 22,400 ml. So 22,400 ml of oxygen is obtained at NTP from 68.8 gram of H2O2 from the reaction. ये कहाँ से मिल रहा है हमें? 68 ग्राम H2O2 से. Now 10 ml of oxygen is obtained at NTP. तो मल्टीप्लाई करेंगे this upon this and into 10. This is 0.03035 gram H2O2. Now 1 ml of H2O2 solution contains 0.03035 gram H2O2. Then 100 ml of H2O2 solution contains 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 3.035 ग्राम H2O2, और द सॉल्यूशन इज 3.035%, और कंसंट्रेशन ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30.35 ग्राम पर लीटर. Now, normality of this solution can be calculated if you know the equivalence mass of hydrogen peroxide. Equivalent mass of hydrogen peroxide is 68 upon 32 into 8 is equal to 70.
तो 68 gram hydrogen peroxide gives 32 gram oxygen. Now number of gram equivalent in 10 volume hydrogen peroxide solution is equal to concentration or strength per liter upon equivalent mass is equal to 30.35 upon 17 is equal to 1.785. Normality of 10 volume solution 1.785 N. Similarly, the concentration of 20 volume hydrogen peroxide solution means 6.073% or 60.70 gram per liter in just double हो जाएगा or 3.57 and let volume strength be V. V liter O2 will be given by 1 liter H2O2 solution. Then at STP, gram liter strength of H2O2 is 68 upon 22.4 into V and N is equal to strength upon EM. That is 68 upon 22 सारी वैल्यू पुटअप करने पे हमको मिलेगा V upon 5.6. Now volume strength is equal to 5.6 into normality and volume strength similarly volume strength 12.5 11.2 into molarity. Now see the structure of hydrogen peroxide. Following two structure were proposed. ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन. ये किंग जेड स्ट्रक्चर कहलाता है. दूसरा स्ट्रक्चर बेयर स्ट्रक्चर है जो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है सबके बीच में. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है. एंड बेयर स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर was accepted. The calculated value of the single bond OO distance is 1.48 angstrom and X-ray measurement to show that in hydrogen peroxide OO bond distance is 1.46 plus 0.03 angstrom. The value of dipole moment is 2.1 T. This suggests that all the four atoms do not lie in plane. The molecule can be pictured as lying in the यहाँ पे दिया हुआ है. The hydrogen atoms are present one on each cover and HO bond making angle of 94.8 degree with the OO bond as here. This type of structure of hydrogen peroxide. इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो इतनी है और ऑक्सीजन के बीच इतनी है. इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये इस तरह से. Now structure of H2O2 in gaseous phase है. ये structure of H2O2 is slightly different in gas phase and crystalline phase. Crystalline phase में structure इसका इस तरह से होगा. So these are the structures of the hydrogen peroxide. तो इस तरह से ये कंप्लीट स्टडी किया तुम लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में. बीच में डिस्टरबेंस हुआ लेकिन कुछ छूटा नहीं. सारी चीज़ें जो है तुमने पढ़ ली आज के क्लास में. क्लास लंबा होगा तो कोई बात नहीं, आधा आधा करके भी देख सकते हो. तो इस तरह से ये तुम्हारा जो हाइड्रोजन का चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया. अब इसकी एक्सरसाइज कर डालो, उसके बाद हम फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे.